वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे दिस मिनी सेट बाय शुगर कॉस्मेटिक्स एंड दिस मिनी सेट कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़। बट आप उनके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, दे आर हैविंग सम डिस्काउंट्स, तो आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा गाइस। एंड मुझे ये बॉक्स मिला था फ्रॉम फैबबैग, सो आई एम गोइंग टू रिव्यू एंड स्वॉच एंड पुट ऑन ऑल द शेड्स। जो 4 मिनी लिप्स शेड्स आपको मिलेंगे इस टिन बॉक्स में। ये कोई प्लास्टिक नहीं है, इट्स अ टिन बॉक्स। एंड रूल द वन लुक एट द टाइम। और सो क्यूट, नाइस कॉन्सेप्ट। आई थिंक कि मुझे ये शुगर कॉस्मेटिक्स का दिस मिनी लिपस्टिक्स बहुत ही पसंद है। लाइक एब्सोल्युटली मैंने 1-2 ट्राई किए हैं और बहुत ही लॉन्ग वेयरिंग है, लंबे समय तक चलता है, इवन आफ्टर यू ईट और ड्रिंक समथिंग। सो ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन है। सो एंड टू इन्वेस्ट इन दिस मिनी लिपस्टिक रेदर ऑन स्पेंडिंग 700 और 800 रुपीज़ ऑन फुल साइज ऑफ 1 शेड, तो आप इसमें से 4 शेड्स सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। एंड यू आर लाइक कि ये शेड मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू कैन बाय दैट वन। अगर इनमें से कोई ख़त्म हो, मुझे नहीं लगता कि ये शेड्स जल्दी ही ख़त्म हो गए, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। बिकॉज मेरे पास मिनी लिपस्टिक फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक थी और लिपस्टिक्स थी, और मैंने वो कम से कम 1 साल तक यूज़ किया एंड अभी वो मेरे ख़त्म हो चुकी है। सो थोड़ा प्रोडक्ट बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, सो इसमें से कोई भी इशू नहीं रहेगा। सो दैट वाज द मेन कंसर्न फॉर मी कि कितने टाइम तक अब छोटी लिपस्टिक्स चलेगी, बट बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है। एंड आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। इवन अगर मुझे फैबबैग में से नहीं मिलता तो मैं ख़रीदने वाली थी। दैट वॉज डेफिनेटली कि मुझे ये लिपस्टिक्स ट्राई करने हैं और आई वॉन्ट दैम। सो द शेड्स जो मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज़ अ न्यूड रूल, तो न्यूड शेड्स सारे मिलेंगे। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस न्यूड लिपस्टिक्स के सारे शेड्स मेरे स्किन टोन पे सूट करते हैं। लाइक आई हैव काइंड ऑफ अ मीडियम टू डार्क स्किन टोन और मुझे सारे शेड सूट करते हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। लाइक दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली gorgeous and absolutely must have product that you like. It's worth money, like really very worth money. ये seriously बहुत ही अच्छा है। So I will be just right back, remove my lipstick and मैं वो cotton and liquid remover लेके आती हूँ और we are going to try every shades from this Sugar Cosmetics box. So I will be just right back. Obviously जब आप लिक्विड लिपस्टिक्स लगाओ then please guys scrub your lips and also कोई भी प्रोडक्ट अपने लिप्स पे नहीं होना चाहिए before applying this liquid lipsticks. So first we are going to start with the shade number 12 and that is Dawn Fun. So smooth and so liquidy, absolutely gorgeous nude color. मैंने सिर्फ वन स्वाइप में ये लिपस्टिक लगाया है। इट टुक मी ओनली वन स्वाइप एंड सी इट्स सो गॉर्जियस। द कलर इज सो गॉर्जियस, एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन। ऑल द शेड्स आर काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन एंड आई एम इन शेड लाइक 228 in Maybelline's Fit Me foundation. Okay. So I'm trying to remove this liquid lipstick, but बहुत ही hard है remove करने के लिए। So the second shade is shade number 13, Wooed by Nude. So the shade looks like this, another nude tone brown color. Okay, the first shade was more on the brown and this is kind of a peach tone color.
So let's just put on it. So और मैंने इस बार तो मैंने अंदर डाला भी नहीं था, just I swipe over here and on swipe on my lips, so that's it. So this is Woof by Nude, shade number 13, peach tone color, and the third shade is Ishita Mistry. So this is like my absolutely favorite color. This is dark brown color. पहले वाले से थोड़ा बट ऑन द पिंक साइड. पिंक एंड मरून साइड, आई वुड से मरून साइड की तरफ ये बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ रेडिश टोन न्यूड कलर. So I like this color, absolutely gorgeous for any outfits. So I like this shade very much. So the last shade is Hot Apricot, and the swatch is this, and the lip swatch, I would say this color is more on the peach side, and the Mystic Tika is on the red side, and Woofed by Nude is on the pink side, like light pink side, and the Dawn Fawn is on the brown side. So सारे कलर्स बहुत ही यूनिक एंड अच्छे मिलेंगे आपको दिस स्पेशली ऑन द न्यूड पैकेज. सो आई लाइक ऑल द शेड्स. आई थिंक दे आर सो फैबुलस. आई विल डेफिनेटली वेयर दिस शेड्स, ऑब्वियसली वेयर दिस शेड. सो दैट वाज ऑल गाइस. सो आपको मेरा रिव्यू और ये स्वॉचेस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. डू गाइस कमेंट एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो.